This file contains all the details necessary for Maven to effective execute a project. Means जो भी चीजें हमें चाहिए, डिटेल्स चाहिए मेविन को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, वो सारी डिटेल्स कहाँ पे होती है हमारी प्रोजेक्ट form.xml फाइल में. Then how we store this particular file, where we storing this particular file. So I'm saying that form.xml file is stored in src or in the root directory, right? It's in sudo or it's in src. So first of all, before going this, I'll show you my terminal. Neha, just let me know that are you able to see my terminal or not? Not yet. Give me a moment. Right now I'm sharing my entire screen. So if you guys remember, yesterday we have installed one server that is called 16.171. So suppose I'll show this. We have opened the port onto the 8080, right? Where I put my credentials and I'm able to open this particular this one, Jenkins file, right? Now what I'm going to do, I just install the Maven over here. Just give me a minute. I just log into this particular server. Yeah, right now you are able to see, right? My terminal. Yes, it's visible. Okay. So if you remember, yesterday we have only worked on to the Jenkins part, right? Right now, what we are going to do, we are working with the Maven perspective. So now if you see here, I need to check that Maven version is there or not. Okay, if Maven version is there, then it's very good, sounds good. But Maven is not installed over here. So what is my next step? That I need to install the Maven over here. Just give me a single minute. Yeah. So first of all, what I need to do, I just need to install the Maven. So with the wget IP command, this thing, I'll just install the Maven over there. As you guys able to get the recording, so you are able to get that as well, right? Then give me a minute. First of all, I just need to upgrade, and then install this. So what I does, I firstly update the system, then upgrade the dependencies, what sort of dependencies we need to upgrade, right? And then I'm going to install the Maven by using the sudo apt install Maven command, right? So it's restarting the system, etc need restart.d system manager. Then what it does, it's restart the crony.service IRQ balance.service and all the services which we see over that chat now, that it will install, right? And afterward,
Yeah. So afterward we can check, like we are showing Apache Maven 3.6.3, right? So afterwards what we need to do, we just need to make one working directory. I just make one working directory. So the command is mkdir and then whatever name you wanna give over here. Suppose if I want to write it mkdir make directory, then my directory name is mvn underscore dir, right? So I just do ls and then I cd maven directory. I just want to go inside this particular directory, and then what I need to do, I just need to run one package over here, right? So I'm just running that particular package over here. So I just need to check that maven package is working fine for me or not. So it's just a sample package I am installing over here. So I'm getting success. So afterwards I just need to check that is it working fine for me, because I just work for the my app. What does it mean, I'll show you first with the command. So I write it over here, mbn architect type is generate dg group id is equals to com dot my company dot app. Then what is the artifact id? I'm saying my artifact id is my app. Then I'm saying uh, d archetype artifact id is equals to maven artifact quick start. Then I'm saying it's version 1.4 and the interactive mode is false, right? I'm saying this thing. So I just need to check that is it my cd app is built over here or not. Okay, is it there? So I just need to go over here. I just need to check that form.xml file and src is over there or not. Yeah. So all this thing is there, like I'm able to see the form.xml file and I am able to see the src, as I already conveyed to you guys that when I am making any package, what is the necessity that form.xml should be there or src should be there. If src is not there, then it's a root directory, right? So moving forward, we can also check that maven package. I'll just I'll just run for the maven package that it's working for an example for testing of that, right? So I just go and just check it over there. That suppose if I installed it, it's working perfectly fine for me or not. Then what I'm going to do, I just make one, snapshot.jar over there. Then what it says, it should be, I'm saying that it's copy target my app one on one snap.jar.com my company.app.app. So it's just printing. Suppose if you are, it means your my maven whatever you install over the particular your server, it's working perfectly fine. And you can see over from here as well. If you see the your building jar file is what, Ubuntu, Maven directory, my app, target, my app 1.0, snapshot.jar. The same thing I'm using over here, and the total time is this one, right? And it's built, finished at this one. So after this, moving forward, I'll show you that what the form dependencies.xml file. If you want, I can show you the what does the form.xml file is. You can see we are having multiple dependencies where I'm saying xml version project xml that my maven.apache.org form 4.0.o. Then we are having group id, we are having artifact id, means the group id which we are using, group id which we mentioning over here, that my company.app. Then artifact id we are mentioning my app. Then version we are mentioning, then we are mentioning name as my app. Then fix me change it to the project website, this is that. Then we are mentioning something over the your properties part of thing. Then dependencies, like dependencies JUnit why I'm saying, because I'm using Java for it, right? Then I'm having plugin management over here, lockdown plugins version to avoid using maven defaults. Then we are having
plugins clean lifecycle like this, then artifact ID Maven clean, then these kind of Maven resource plugin we are having, Maven compiler, Maven Sapphire, Maven jar plugin, Maven install plugin, these kind of things, sort of things we are having over in the pom particular pom.xml file. So moving forward, I'm going. So just give me a minute. Sorry. This. So I'm having this thing where we I'll show you guys that what does the pom.xml file and how it looks and what sort of dependencies and the artifact and the group ID it is having. Then we are working onto the Maven build life cycle. Am I audible to all of you? Is till then any doubt, anything? If anyone asks. Is everything clear to you guys? So hoping that everything is clear to everyone. So I'm moving forward to the Maven build life cycle. What is the Maven build life cycle is? So when I'm talking about the Maven build life cycle, we are having the 7 phases. First of all, what we do, we did the validation, then we compile the code, then we test that code, then we package, make it into the uh, package format, then we verify, then we install, and then we deploy. These are the 7 phases which we are having under the Maven build lifecycle, right? Then we are going, now what we are going to do, we are just accelerating one by one, phases, that what the validate phase mean, then compile, then text, then package, then verify. Suppose if you are saying that you are working onto the Maven, suppose if someone asks you that what are the phases you are having for the build life cycle, so Maven build life cycle, so you guys to be very clear onto that part, that you are having the 7 phases where you are having the validate functionality, then compile, then text, then package. It's very easy. Like first of all, how you process that things, right? Suppose if you are working as a any like if I'm saying in a real scenarios as well, first of all what you do, first of all when you're writing any code, you just validate that code, then what you do, you compile, then you run that particular test or code, then what you do after doing that, you need to package it into the format, whatever the format, exe, anything, zip, zar, anything, war files, anything. Then you verify by someone, right? If someone verify, like your higher management, or if you raise the PR and it approved, then you install that test, and then you deploy into the production or the staging environment or the non-prod environment, whatever the requirement of your client. Then after going to the validate phase, what does the validate phase mean? Validate the project is correct and all necessary information is available or not, right? This is, we can did it any, suppose if we write any code also, we can just do these checks, right? That validate the project is correctly right, there's no indentation error, we are getting the completely successful response, this kind of thing. So validate the project is correct and all necessary information is available. Then we are saying the compile phase. What does the compile phase mean? That when you are compiling the code, right? When you are merging that code, if I'm saying in layman language, when you're merging that particular code, compiling means merging. Then during the compile phase, Maven will compile all the .java files. As I say, Maven is using the Java files only present in the main directory into the .class file. What it says that it compiled all the .java files present in the main directory, and where it doing that into the .class file and put them back into the main directory in the dedicated folder, right? What it says, first of all, it goes to the directory, then it gets the .java files from the directory, then it makes Java apps, then it goes to the Maven, then compile that code, then class file, and then again store class files into the directory. So in this manner it rotates. First of all, it gets the Java files from the directory, then it what Java files, whatever it makes, it present into the format of what, Java app. Then where it goes to the Maven, that check and validate that is everything is working fine. When Maven check and validate, it compiles that particular code and compile, and then fetch into like store it into where it is stored into the .class file, and then .class file send it where
it send it to the main directory once again. That it shows that during the compile phase, Maven will compile all the Java dot files, Java dot app files to the main directory, right? So this is the process in between, like Java app files to the class.files. We are having two phases, Maven and the compilation part. Then we are saying the next thing, what are the test phase? Then during the test phase, what does Maven do? Maven will execute the specified test cases and create a summary log. When you are creating, suppose if you are writing any Maven, I'll just show you right now, straight away after this. So you guys also understand that what exactly it means. So during the test phase, Maven will execute the specified test cases and create a summary log. Suppose if you give some test cases, it goes to the Maven, then Maven do some testing, and then it produces some test cases into the format of the result, right? Suppose if I'm saying this particular switch is working or not, suppose this color, this is working for the registration part, login part, these kind of the format it present into the form of the console output, and it says that it's perfectly working fine. You can go further for the other tests, other phases, right? After, we'll check for the validate phase, we'll check for the compile, then testing, and then we come for the packaging, where we do the packaging of these particular files. Okay, so during the package phase, Maven will package. What Maven will package? Definitely Maven will package all the clause file, because it's stored into the main directory and resources into one file, right? While going from java.f files into the class.f files, what it took, it just took all the things from the class.files and resource into one file. This file will be formatted into one of the three types given below: jar archive, var archive, or year archive, right? Where we are having class files, then it's packaging, and then archive files. Any doubt till here? Anyone? Please interact with the sessions. Like if you have any doubt, let us know, so we are able to help you out. Akriti, Aditya, Lavi, Shikhar, Swapnil, anyone is having any doubt? I'm not able to get you. Lavi, you are saying something, right? मैम ये बोल रहा था हिंदी में बता दो थोड़ा। हिंदी में बता दूं? जो भी बताया, पहला फेज हमने मेविन की बिल्ड लाइफ साइकिल्स बताई हैं, उसमें आपके 7 फेसेस हैं। पहला है आपका वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब जब आप चेक्स पास करते हो कि आपने वैलिडेट किसी भी चीज को, ठीक है, तो वो वैलिडेट हो रहा है या नहीं, वहां पे वो सारे प्री रिक्विजिट हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं या नहीं, उसको, उस फेज को क्या बोलते हैं? वैलिडेट फेज, राइट? फिर आपके यहाँ से वैलिडेट द प्रोजेक्ट इज करेक्ट, मतलब जब भी आप किसी चीज को वैलिडेट करते हो तो क्या करते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सही है या नहीं, जो उसमें कोड लिखा गया है वो सही है या नहीं, इंडेक्सिंग सही है या नहीं, जितनी भी आपको नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट को, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, वो वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, ये आपका होता है वैलिडेट फेज, राइट? फिर आपका दूसरा फेज आता है कंपाइल फेज। कंपाइल फेज जब आप क्या करते हो, मतलब मर्जिंग करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेविन क्या करता है, जितनी भी उसकी फाइल होती है वो, उसके पास एक डॉट जावा फाइल है, एक पाथ है डॉट जावा फाइल, वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? आपकी मेन डायरेक्टरी में, राइट? और वो वहां से उठा के कहाँ कर देता है? आपकी क्लास फाइल में, और उसको फिर से स्टोर कहाँ करा देता है? आपकी मेन डायरेक्टरी इन द डेडिकेटेड फोल्डर। अब ये इसका प्रोसेस क्या है, पहले आप डायरेक्टरी में गए, डायरेक्टरी में जाने के बाद आपने क्या किया, आपने गेट कर ली सारी जावा फाइल्स फ्रॉम द डायरेक्टरी, फिर आपकी क्या बन गई? जावा डॉट जावा ऐप बन गया। फिर आप मेविन के पास गए, मेविन ने क्या किया कि वैलिडेट किया, उसने कहा कि हाँ यार सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर उसने क्या किया, अगर भाई सारी रिक्वायरमेंट्स है तो अब मैं कंपाइल करा देता हूँ। कंपाइल कहाँ पे वो कराएगा? डॉट क्लास फाइल के नाम के पास, ठीक है? अब डॉट क्लास फाइल ने क्या किया, अब उसने देखा यार सब कुछ सही चल रहा है, कंपाइलेशन सही से हुआ है, तो मैं इसको कहाँ पे भेज दूं? अपनी मेन डायरेक्टरी में भेज दूं।
ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंपाइल फेज का काम ही होता है कि आपका जो भी क्लास फाइल में है वो फिर से पुट देम बैक इनटू द मेन डायरेक्टरी इन द डेडिकेटेड फोल्डर, मतलब हम उसको फिर से वहां पहुंचा दें जहां उसकी मतलब जगह है, ठीक है, मेन डायरेक्टरी में। फिर अब हम आते हैं टेस्ट फेज में। टेस्ट आप सपोज करो आप भी कोई टेस्ट करने जाते हो, तो अगर आपको मैंने बोला कि आप एक टेस्टिंग करके दिखाओ, टेस्टिंग मतलब आप फिर उसका पूरा फीचर चेक करोगे ना, कि जो जो चीजें हैं जहाँ पे होनी चाहिए, पहले आप पूछोगे कि क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, फिर आप उस अकॉर्डिंग टेस्ट केसेस बनाओगे। सपोज करो मैंने आपको एक फीचर दे दिया मोबाइल का ही, ठीक है, मोबाइल का फीचर दे दिया कि ये पर्टिकुलर आपका फ्रंट पेज है और इस पे बताइए कि क्या क्या चीजें आ रही है, वो आ रही है या नहीं, तो आपको टिक मार्क करना है कि अगर ये टेस्ट केस पास कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने लॉग्स बता दो। लॉग का मतलब क्या होता है कि आपने उसको एकदम बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वे में अपने वो कमेंट्स डाल दिए, उसको हम बोलते हैं क्रिएट अ समरी लॉग। अब क्या कह रहा है, ड्यूरिंग दैट टेस्ट फेज मेवन क्या करता है, एक एग्जीक्यूट करता है अपनी स्पेसिफाइड टेस्ट केस और वहां से क्या क्रिएट कर देता है आपका एक समरी लॉग, जो मैंने आपको हिंदी में बताया कि वो जाता है वहां पर चेक करता है जो भी आपके टेस्ट केसेस उसको करने होते हैं। मेवन टेस्ट केस गया मेवन के पास, मेवन ने सारी टेस्टिंग करी, उस टेस्टिंग करने के बाद क्या कर दिया, एक आउटपुट निकाल दिया। आउटपुट मतलब जब भी जो भी उसको जो भी चेंजेस लग रहे थे, जो भी टेस्ट केसेस पास हुए थे, जो भी फेल हुए थे, उस अकॉर्डिंग उसने क्या कर दिया, एक समरी निकाल दी, राइट। अब हम आते हैं पैकेज फेज में। पैकेज क्या करता है, मतलब आपके पास एक फाइल पड़ी हुई है, वो टेस्ट हो चुकी है, लेकिन आपको उसको एक एग्जीक्यूटेबल, आप सपोज करो अगर मैं कहूँ कि 25 जीबी की फाइल है या एमबी की फाइल है और आपको वो डालना है कहीं, ठीक है, आपको मेरे को गूगल ड्राइव पे देना है, तो आप नहीं दे पाओगे ना, आपको उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। इधर आप वो जिप में करो, इधर वो टार में करो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, मतलब आप उसका साइज छोटा कर रहे हो, राइट। तो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द पैकेज फेज मेवन विल पैकेज ऑल द, अब वो ये कहां से रिलेट कर रहा है, आपके कंपाइल फेज से। अगर आपको कंपाइल फेज समझ आया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा क्या करता है मेवन, जितने भी आपके डॉट क्लास फाइल के पैकेज हैं उसको पैकेज करता है, फिर उसको रिसोर्स को कहाँ डालता है, एक फाइल में डालेगा। दो फाइल लेने का मतलब नहीं है, तो उसने क्या किया, एक फाइल में उसको डाला, फिर उस फाइल से एक फॉर्मेट क्रिएट किया, और वो फॉर्मेट कहाँ कौन कौन से है, जैसे हम जावा यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हम जार फाइल बना सकते हैं, जार आर्काइव बना सकते हैं, वार आर्काइव बना सकते हैं और ईयर आर्काइव बना सकते हैं, राइट। इतना समझ में आया आपको? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम, आ गया। नेक्स्ट वी कम इनटू द वेरीफाई स्पेस। लवी, इफ यू लाइक, आपको इंग्लिश और हिंदी का बैरियर है, राइट, तो आप पहले एक बार मतलब जब आप सेशन हम स्टार्ट करेंगे और आप एनरोल करेंगे अपने आप को, तो आप जब भी सेशन जैसे हो जाता है ना, एक दिन जैसे मैंने कल पढ़ाया कुछ, आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही, तो आप अपने आप को खुद टाइम दीजिए, उसके बाद आप इन्वॉल्व होइए, तो आई थिंक दिस विल सॉर्ट आउट योर, आपको फिर इतना इशू आएगा नहीं, राइट। Then we'll come to the next phase, our fifth phase, that is the verify phase. Then what we are going to do, we run and it runs any checks on the result of the integration test to ensure the quality criteria are met or not. Suppose when we are going to do any kind of verification for anything, we'll just run the some test cases or some difficult scenarios. Suppose if you want to check the quality of your like if I'm saying a clothes or something, whatever you are, so you guys, what you check the quality material, right? So we are having the quality criteria for the this code as well. Okay, so it runs any check onto the result of the integration test to ensure quality criteria are met or not. At the same time, all the previous life cycle phases are also executed. Means when I am in the fifth phase, what I am committing from here, that all the four phases are successfully deployed till then, right? Successfully executed. Then our next phase, what are the phase? Install phase. When I am installing the package into the local repository, local folder, if I say repo, then for user dependency in the other projects locally. Locally means when I'm saying local server, when I'm using my own server, right? All previous life cycles are also executed. This is very simple. Then deploying, when we are, after this, we are deploying the phase. So it copies the final package to the remote repository for sharing with other developers and the projects, right? In this manner, your phases are deployed. Then we are come to the
then we are coming to the Maven repository. When I'm talking about the repo is nothing. It's just a folder, you can say in your layman language. After Maven understand which all the dependencies are needed from the pom.xml file, means project object model.xml file, it will download those dependencies from remote repository and then store them in the local repository. अब क्या बोल रहा है यहाँ पर लवी, मैं आपके लिए हिंदी में समझा रही हूँ कि मेवन पहले अंडरस्टैंड कर चुका होता है। जब देखिए, जब आपने सारे फेसेस पास कर लिए, मतलब आपका सारी चीजें पास ऑन कर गई है। वेरीफाई मैंने बता ही दिया था। फिर उसके बाद आता है इंस्टॉल, जहां पे आप सारे इंस्टॉलेशन कर लेते हो। जब सारे इंस्टॉलेशन हो जाएंगे तो क्या करते हो, आप डिप्लॉय कर दोगे, ठीक है, उस एप्लीकेशन को आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या नॉन प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में, डिपेंड्स टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, राइट। फिर उसके बाद क्या आता है, मेवन रेपोजिटरी। रेपोजिटरी एक काइंड ऑफ फोल्डर है आपका। आफ्टर मेवन अंडरस्टैंड विच ऑल डिपेंडेंसीज आर नीडेड लाइक फ्रॉम द pom.xml फाइल, कौन कौन सी, अभी तक क्या कर चुका है मेवन, समझ चुका है कि उसको कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए मेरी pom.xml फाइल के लिए। तो वो क्या करता है, वो डाउनलोड कर लेता है सारी डिपेंडेंसीज को। कहां से, अगर मैं रिमोट, अभी देखिए मैं अभी क्या यूज कर रही हूँ, रिमोट सर्वर यूज कर रही हूँ, राइट, क्योंकि ये क्लाउड से रिलेटेड है। अभी मैं अपने सर्वर पे लॉग इन करूं तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा लोकल सर्वर हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वहां से सारी डिपेंडेंसीज को गिव मी अ मिनट, वो क्या करता है, रिमोट से सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करता है और स्टोर कहाँ करा देता है, मेरे लोकल रेपोजिटरी में, फॉर करंट और फ्यूचर यूज, कि मैं अभी यूज कर सकूं अगर मुझे यूज करना है, और अगर मैं फ्यूचर में चाहती हूँ उन टेस्ट केसेस को यूज करना तो भी मैं यूज कर सकूं। ये क्या काम करता है, मेवन रेपोजिटरी इसका काम करता है, ठीक है। अब क्या कहता है, आज फॉर द डिपेंडेंट pom.xml फाइल क्या कहती है, pom.xml फाइल मैंने आपको पहले भी बताया, pom.xml फाइल टेल यू अबाउट द dependencies. You don't need to taken care of the dependencies, that is taken care by the pom.xml. तो pom.xml भी तो किसी से dependencies मांग रही होती है ना, तो किससे मांगती है, मेवन से। और मेवन क्या करता है, रिमोट रेपोजिटरी में जाता है, सारी चीजें डाउनलोड कर देता है और वो कहाँ दे देता है, लोकल रेपो में, राइट। So what does Maven do? Pom.xml, it asks dependencies from the Maven, and then Maven stores the dependencies from the remote to the local uh, and transfer it to the local repository. And then Maven gets the dependencies from the remote repo. In this manner, it works. Then we are installing the Maven, as I already did that. And then we can build the project as well. So we can, like, these are the phases which we deploy. Okay. We can create a simple dynamic website project in Jenkins, pull the code from GitHub. So these involve many test cases. So we'll just into this particular thing, we'll just tell you that how the pipeline works, how the Maven works, how we install the Maven integration and all these things, and how the process works, right? So now I'm going to bit further. Sorry. So suppose if you want to build anything, right, over this Jenkins pipeline. Neha, you are able to see my screen? A pipeline window. No. What you are seeing right now? Could you please tell me? Continuous integration slide. Okay, just let me know once if you are able to see the Jenkins portal. Yes. Jenkins Are folder you? is with. Yeah. Then we need to create one. Suppose if I want to create a freestyle project, right? So what I say, suppose if I just check for Maven hyphen test, I just need to go okay. And then my first Jenkins job. Okay. So what does it mean? Okay, I'll show you.
I'm just building a base